Let's get started with, as of now, in our previous lectures, we are done with PCM. We're done with noise and PCM system, right? That's what we have been doing so far. Now, we'll try to see some of the basic questions which we can do in this PCM or noise and PCM related some numericals very quickly. So, कल का conclusion याद है हमें? Radu conclusion छ जैसे याद? What was the last point in yesterday's class? Rule number 34. Are you online? Roll number 34. Are you online? बस मुझे ये बताओ सिर्फ कि वेरी क्विकली कल का लास्ट पॉइंट क्या था? If you remember, just tell me that I don't remember. That's also okay. If you remember, what was the last point yesterday? Okay, that's fine. Our last point yesterday was we tried to represent that this SNR in terms of dB. हमने कहा SNR dB rather signal to quantization noise ratio को हमने एक dB quantity बनाया and we represented that. तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आप लिखिए जल्दी से इसके बारे में. We have a question which is, please start writing a message signal. Everybody is, please start writing a message signal given as 10 cos of 2 pi 10 raised power 4t. A message signal given as 10 cos of 2 pi 10 raised power 4t is transmitted through a PCM system such that signal to quantization noise ratio such that signal to quantization noise ratio SQNR, it's also denoted as this SQNR. आप एक क्वेश्चन लिखिए. I'll repeat. A message signal given as 10 cos 2 pi 10 raised power 4t is transmitted through a PCM system such that SQNR should be at least equal to. When I say at least, तो मतलब क्या हो? या उतना या उससे ज्यादा. Am I right? Should be at least means या उतना हो, equal या उससे ज्यादा हो. किससे ज्यादा? Should be equal or should be at least equal to 22 dB. ये वर्डिंग तरह समझ न्यूमेरिकल्स में 90% वर्डिंग मजी आपको जो आंसर छिपा होता है. वर्डिंग समझने में गड़बड़ हो गई, पूरे न्यूमेरिकल में गड़बड़ होगी. So when it says that should at least be this much, at least मतलब को यागश यूथ आसो ना तो तम खुद ज्यादा. So इतना या इससे ज्यादा. Now what you have to find is find transmission bandwidth and SQNR in dB. Find the transmission bandwidth and SQNR in dB. Point number 1. First thing that we see is AM को हम निकालेंगे. जल्दी जल्दी. Roll number 29. Are you there? You are following? Am I audible? Am I clear? कहीं लिंक ब्रेक हो तो मुझे बताना प्लीज.
So AM is the first thing. AM कितना है number 29? AM is 10 volt. 29 पूरा बताओ ना. 10 volt. उसके बाद FM कितना है? 10 kilohertz. Excellent. We have A, we have FM. What is the first thing that we can derive out of this is Nyquist rate? And Nyquist rate is equal to twice FM, which happens to be 2 into 10 is 20 kilohertz. Point number one. Point number two, मुझे वहीं से दिया गया है that SQNR is greater than or equal to 22 dB. एक particular value दिया गया है, ठीक है? ओके? लेकिन हमें पता है SQNR जब हम कल SQNR by SQNR I mean signal to quantization noise ratio. That is SP by NQ. Now this is a dB quantity over here. This is also dB. इसको हमने कल रिप्रेजेंट किया था अंत में क्लास के लास्ट में आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस दैट इट विल बी इक्वल टू we'll say approximate equal to 1.8 plus 6n. हमने कल की क्लास में लिखा था 1.70 कुछ और 1.66 कुछ, राइट? सॉरी 0.6 या 6.02. So we approximate it to 1.8 and 6n generally numericals में. So this is greater than equal to 22 dB. When we solve this, you will solve this at your own. N is approximately finally equal to 4. अच्छा ना कोई वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ जरा सॉल्व करें अपनी जगह इसको. वेरिएबल कौन सा है? n निकलेगा approximately equal to 4. निकल गया इतना. Now we have to, ये कौन सा सिस्टम है बेटा? नंबर 29 कौन सा सिस्टम है? राइट है ना, पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम. मैं कह रहा हूं मुझे ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए. ट्रांसमिशन बैंडविड्थ विल बी इक्वल टू व्हाट? Right, divided by 2. When I say maximum transmission bandwidth, then it is equal to bit rate. When I say transmission bandwidth, and I don't add the word maximum with it, so you should understand by default it means RB by 2, right? So we have question में क्या बताया गया है? Maximum bandwidth या bandwidth? Bandwidth. So point number 3, bandwidth is equal to RB by 2. We know RB is equal to N into F of S. Since nothing has been said here about this f of s, so we take it by default equal to Nyquist rate. Okay, so the conclusion final answer is 40 kilohertz. Next point is हमें ढूंढना है point number 4, SQNR dB, that is actually equal to 1.8 plus 6n, and this value will turn out to be 25.8 dB. ठीक है? Because here we are trying to now find by putting n equal to 4, n4 put करके क्या वैल्यू आएगा. ठीक है? Is that clear? कुछ confusion? 29, do you have some confusion? Roll number 19, do you have some confusion?
Roll number 19. Do you have some confusion? कौन सा वाला? हाँ बेटा वो अभी पहले ही क्यों नहीं आपने बताया, वो मैंने इरेज कर दिया। बेसिकली क्या है, कल के लेक्चर में, सिंस आपने कल का लेक्चर मिस किया ना आपने कल का लेक्चर मिस। हाँ, सो कल के लेक्चर में हमने लास्ट पॉइंट एक, बट अनफॉर्चुनेटली वो किसी ना ही यूट्यूब लाइव पे है ना ही कहीं है। इफ यू वांट आई कैन मे बी एड सम स्मॉल क्लिप ऑफ यस्टरडेज लेक्चर फर्स्ट एंड देन वी कैन एड दिस। सो कल के लेक्चर में हमने लास्ट पॉइंट पे ये कहा था कि अगर सिग्नल टू क्वांटाइजेशन रेशियो डीबी में निकालना होता तो उसके लिए ये फॉर्मूला होती है। हमने यही फॉर्मूला इसको यहां से दी एंड वी सेड दैट दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 22 डीबी, क्योंकि 22 डीबी वहीं से दिया था वैल्यू, लेकिन हमने ये कंडीशन भी दी थी दैट इट कैन बी फाइनल जो एक्चुअल वैल्यू निकलेगा वो होगा ग्रेटर और इक्वल, और वही निकल रहा है। ये वाला 25 उस 22 से ऑब्वियसली ज्यादा है। So उस फॉर्मूला से हमने n निकाला। Excuse me for this. Maybe you will not be able to understand unless you know the yesterday's formula. So it is related to that. बुबुश भी क्या है करता खतरा। Maybe I will upload some small clip जो उधर से कंटिन्यू करेगी इसको। अच्छा ठीक है। Anyone else with some confusion? Rule number 29. Can you tell me कि आपको फिगर आउट हुआ ये? यहाँ से फिर n कहाँ से निकला? ये प्लीज जरा लेक्चर के एंड पे ये पेज शेयर करना ग्रुप में, सो दैट एवरीवन एल्स इज आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड। आई थिंक वो कंफ्यूजन है शायद नंबर 19 को कि हाउ डू यू यूज लॉग वगैरह है जो भी कुछ वहां पे कैसे यूज करना है एंटी लॉग, राइट? बट नाउ आई विल मूव ऑन हियर एज ऑफ नाउ। आवर नेक्स्ट हेडिंग इज टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। काफी सिंपल, काफी इजी, क्योंकि I think most of the topics here in communication are easy and are mostly related to what we have previously studied, and that's what makes them easy. But for those unfortunately who have missed a lot of lectures, the difficulty level remains same for them. So that's why I often tell you, do not ever miss the first few classes of your semester and last few classes of your semester. They are always the most important, and rest beach mein they are important, maybe not the most important. So TDM stands for, is it visible? पता नहीं मुझे क्यों आज लग रहा है थोड़ा लाइट दिख रहा है. Is it visible? Fine. So TDM stands for time division multiplexing. Our next heading is time division multiplexing. इसमें लिखिए पहला point, TDM is used for multiplexing digital, या TDM can be used for multiplexing digital signals. Time TDM can be used for multiplexing digital signals through a channel. ठीक है, इससे पहले आपने क्या देखा था? इसी जैसी कोई एक टेक्निक याद है आपको? 29, do you remember? Number 19, do you remember? Number 19, do you remember? इसी जैसी कोई एक टेक्निक हमने इससे पहले पढ़ी थी। है क्या बोल रहे हो? पेपर में आपने पेपर नहीं दिया तो? पेपर में तो आया था ना एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्स। ठीक है, याद रखें एफडीएम इज मोस्टली यूज्ड फॉर एनालॉग कम्युनिकेशन, while as FDM you will be able to use it for digital communication. ठीक है, याद होगा? So it is more like similar, ब्लॉक डायग्राम सेम है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं विद M1 of t, m, चलो इसी को पहले कंप्लीट करते हैं। हम इसको देते हैं टू अ लो पास फिल्टर, लेकिन वहां पे मॉड्यूलेटर था, यहां पे मॉड्यूलेटर नहीं है, यहां पे एक स्विच है। तो गड़बड़ हो जाएगी, डायग्राम बड़ी हो गई। Just redraw it. So I think this corner is also visible. So I'll start with M1 of t being a message signal. It is given to a
low pass filter which gives it to a switch. This switch is called as commutator switch. I again have M2 of T. This is given to a low pass filter. I have M3 of T. This again is given to a low pass filter. And then finally to the switch. This switch is able to move like this, that it at a given time connects to M1 of T, then to M2 of T, then to M3 of T. Are you able to get me? समझ आ रहा है? ठीक है. So इसके अंदर इसके बाद यूज होगा एक क्वांटाइजर. इसका नाम रहेगा कम्यूटेटर स्विच. जिसका सैंपलिंग पीरियड रहेगा TS. इस लो पास फिल्टर का काम क्या है? मैं भी आप सब लोग सोच रहे होंगे. दिस इज यूज्ड एज एंटी एलाइजिंग फिल्टर. एक क्वांटाइजर ब्लॉक, एक एनकोडर, फिर हमारी चैनल. जब रिसीव होगा सिग्नल तो पहला ब्लॉक क्या होता है? अगर मेरा सिग्नल एनकोडेड है तो एनकोडेड सिग्नल को क्या करना है? पहले decode. Exactly right. So the first block by the logic itself is decoder. Decoder. यहां से था कम्यूटेटर स्विच, तो यहां से आएगा डी कम्यूटेटर स्विच. बिकॉज जिस तरह क्वांटाइजर है, मैंने आपको बार बार ये कहा, फिर से रिपीट करता हूं, जिस तरह क्वांटाइजर है इस तरह हमारे पास कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जो डी क्वांटाइज करेगा. वी डोंट हैव दैट. So that is one of the problems of this digital system also, that we don't have a block exactly which does the dequantization in a way. But yes, analogy of that is available. So that's why there is no dequantizer. Decoder के बाद सीधा आपका decommutator switch है. क्या है? रोल नंबर 21 क्या है? रोल नंबर 21 क्या है? रोल नंबर 21 is present. रोल नंबर 2, are you present? शाबाश. Try the mic on this after 2. Are you present, roll number 2? बताओ माइक ऑन या मिनट. ठीक. आप कहाँ हो उस टाइम एग्जैक्टली? अच्छा, आप दिन में ट्रेनिंग के लिए जाते हो? जी, आप दिन में ट्रेनिंग के लिए जाते हो? आप दिन में ट्रेनिंग के लिए जाते हो? अच्छा अच्छा, चलो अल्लाह शिफा दे. सो ये हमारा ब्लॉक आ गया डिक्वांटाइजर. इसमें the first thing which we will have is a low pass filter 1. Output of this is M1 of T. Here we have low pass filter 2. Now यहां पे तो खैर सेम लो पास फिल्टर था, लेकिन यहां पे ये दिख रहा है आपको? नहीं. It's visible now. How will I do this? Is it visible now?
नहीं ऐसे भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये है आपका LPF1 और आउटपुट में M1 ऑफ टी, ये है आपका LPF2 आउटपुट में M2 ऑफ टी। इस वाले थर्ड से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या है। So this is your third one, LPF3, and the output will be M3 of T. ठीक है जी, इसका नाम है D, कम्यूटेटर स्विच। इस फिल्टर का काम होगा रिकंस्ट्रक्शन करना। सो इसीलिए इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर। अब क्या होता है, जरा जल्दी से समझिए इसको, इसका ऑपरेशन समझिए। ऑपरेशन इसका कुछ इस तरह से है, जब मेरा M1 मुझे ट्रांसफर करना है, से फॉर एग्जांपल इसके पास दो सैंपल्स हैं, T1 पे और T2 पे। तो फॉर T1 एंड T2 मेरे सैंपल्स आगे चले जाएंगे। जब T1 एंड T2 खत्म हो जाएगा, फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ T3 एंड T4 मेरे इसके दो सैंपल्स चले जाएंगे, इट कैन बी एनीथिंग। तो जब वो आगे चले जाएंगे, देन इसके सैंपल्स which say for example is T5 and T6, याद रखें this is time division multiplexing, that means हम particular time slot dedicate कर रहे हैं एक मैसेज सिग्नल को। ये लाइन याद रखिएगा, this is time division multiplexing, that means जो मेरा टाइम है, एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है, से मेरा आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे का टाइम मैं डिवाइड करता हूं बिटवीन 3 चैनल्स। तो हर एक चैनल को कितने मिनट मिलेंगे? हर एक, एवरीवन प्लीज, एवरीवन स्पीक, हर एक चैनल को कितने मिनट मिलेंगे? मैं फिर से सवाल पूछता हूं, बिकॉज अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया इसका मतलब आपको समझ आ गया। दैट्स व्हाई आई वांट एवरीवन टू से। देखिए जी, मैंने ये कहा ये है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसका मतलब टाइम का बंटवारा हो रहा है। मेरे पास सपोज चैनल में चलने के लिए आधे घंटे का टाइम है, ठीक है। उस टाइम को मैं डिवाइड कर रहा हूं बिटवीन 3 चैनल्स, मतलब पहले 10 मिनट इसको, दूसरे 10 मिनट इसको, तीसरे 10 मिनट इसको, ठीक है। सो हर एक चैनल को कितना टाइम मिला? एग्जैक्टली राइट, 10 मिनट। नाउ सपोज इफ आई हैव 1 आवर एंड आई हैव 3 चैनल्स, हर एक चैनल को कितने मिनट मिलेंगे? एवरीवन प्लीज। 20 मिनट्स, राइट, दैट्स द राइट आंसर। सो आया आपको समझ कुछ ये कैसे काम हो रहा है? सो इसका मतलब चैनल विल समवट लुक लाइक दिस। जो चैनल के अंदर सैंपल्स होंगे, से दिस इज टाइम 0, पहला सैंपल से होगा T1, दूसरा होगा T2, ये दो सैंपल्स होंगे सेम टू सेम। एंड इनकी डिफरेंस आपस में होगी कितनी? T of S। हेलो, वेट, इनकी डिफरेंस अभी T of S नहीं होगी, ये होगा ऐसे T1 T2। ओके, आगे दो सैंपल्स, ठीक। अब मुझे दूसरी चैनल का सैंपल लेना है, दैट मींस T3 और T4, लेकिन T3 will be actually equal to T1 plus T of S, और T4 will be equal to T2 plus T of S, right? इसी तरह अब थर्ड, so this belongs to M of T1, this belongs to M2 of T। इसी तरह और दो सैंपल्स होंगे एट टाइम। समझ आ रहा है यहां पे कि जंबल हो गया? समझ आ रहा है यहां पे? T5 और T6, हाँ, ब्लॉक डायग्राम में एरेज कर देता हूं।
सो इसी तरह लेकिन T5 और T6 की आपस में क्या रिलेशन होगी? T5 will be equal to T1 plus 2 times T of S, and T6 will be equal to T2 plus 2 times T of S, or else I can derive its relation with T3 T4 also. लेकिन अगर मैं यहाँ पे T3 T4 यूज करूंगा, यहाँ पे फिर 2 times T of S नहीं आएगा, यहाँ पे T of S ही आएगा, क्योंकि उनसे प्रीवियस सैंपल्स से ये एक T of S दूर है, ये एक T of S दूर है, इससे ये एक T of S दूर है, ये एक T of S दूर है. समझ गए बेटा? सो कम्यूटेटर स्विच बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा और हमारा डी कम्यूटेटर क्लॉकवाइज. सो दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. आप लिख सकते हैं, इसमें थ्योरी खुद ऐड कीजिएगा प्लीज. आई विल लीव दैट टू यू. दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक डायग्राम इज अ The first part of this block diagram is a low pass filter followed by a commutator switch. Low pass filter performs the job of anti-aliasing. The commutator switch performs the job of connecting between the three different message signals, and it rotates clockwise. Fine. So I'll just erase this. कुछ एक आध पॉइंट इसके बारे में न्यूमेरिकल एंड से लिखने जरूरी है. I'll very quickly write that, and with that we will leave. So जो हमारा T of S होता है, T of S is equal to number of signals multiplexed. कितने नंबर ऑफ सिग्नल हम मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं? इनटू नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इनटू बिट ड्यूरेशन. इसका मतलब हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स को, लेट्स से नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू कैपिटल N and bits used obviously equal to N, and bit duration is TB. We know that. So that means the final formula will become N TB. So TS is equal to N TB. Therefore, we can also say that यहाँ की bit duration that will be equal to TS by NN, and just remember this. इसी तरह आप RB का वैल्यू खुद निकालेंगे. RB is equal to 1 by TB, so उसको भी इससे रिलेट करेंगे. ठीक है, I will leave that to you. ठीक है जी, we will stop here and we can इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और है, वो हम कल देखेंगे. We will stop here.